Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 9 maths, and our chapter is circle. Okay. In this chapter, yesterday we learned some theorems. Okay. Which theorem we learned? First theorem is says us equal chord of a circle subtend equal angle at the center. Okay. Now its converse is if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal. Okay, so which result we have to find? If from these two theorems we find if two chords of a circle or congruent circle are equal, then they subtend equal angle at their center. Okay, अगर दो chords equal हैं तो वो center से equal angle बनाएंगी, और अगर सेंटर से इक्वल एंगल बन रहा है तो वो दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं? इक्वल है. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज द रिजल्ट वी हैव फाइंड फ्रॉम दिस टू थ्योरम्स. ओके, नाउ सम एक्सियोम्स आर देयर. मीन्स टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल आर कॉल्ड congruent arc if one are superposed to other. Okay, we know that. And so we can say that if two chords of a circle are equal, okay, अगर दो chords equal हैं, then their arc are also congruent arc are also equal, and is conversely if two arc of a congruent circle are equal, then their corresponding chords are equal. Okay, these are called axioms of equal arc. Okay, now we know if chords are equal, then arcs are equal, and arcs are equal, then chords are equal. So we can say that congruent arc of a circle subtend equal angle at their center. Okay, and conversely if two arc of a circle subtend equal angle at their center, then the arcs are congruent. Okay, and in fact we can say that if two arc of a circle are equal, then they subtend equal angle at their center, and conversely if two arc of a circle subtend equal angle at their center, then the arcs are equal. Okay, then we learn our third theorem. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. Theta bisect the chord. And next theorem says the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. Okay, understand? And then we learn there are one and only one circle passing through three given non-collinear points. Okay, understand? And what corollary we have to find? means अगर प्लेन में हमने सर्कल पर कोई बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है ऑफ अ chord, so that perpendicular bisector is must be passing through the center of a circle. Okay, and the perpendicular bisector of two chord of a circle intersect at the center of the circle. Okay, they are intersect. अगर हम perpendicular bisector डालते हैं नॉन पैरेलल chords पर, तो वो bisect करेगा कहाँ पर? सेंटर पर. Okay, understand? And there are on one and only one circle passing through three given non-collinear points. Okay, then we learn the our equal chords of a circle are equidistant from the center. Okay, equal chords of a circle are equidistant from their center. We learned this theorem 11.6 in our previous video. Now we learn 11.7, that is converse of this theorem is chord of a circle that are equidistant from the center of a circle are equal. Okay, means how to prove this theorem? Just see. Let's draw the circle. Okay, or okay, these are two chords A, B and C, D. This is our center O. Okay, this is perpendicular bisector, and this is M and N. Okay, so
given AB and CD are chord of a circle with center O, OM perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. It's given. Okay. OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. Okay. Understand? So हमें प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू सी डी. क्या AB इज इक्वल टू सी डी होगा? सो हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ अ सर्कल. ओके, सो लेट्स प्रूव दैट इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ए ओ एम एंड ओ सी एन. ओके, ओ ए एम एंड ओ सी एन, these two triangle we get OM is equal to ON because it's given. OM is equal to ON, it's given. Okay, now OA is equal to OC because it's radius of a circle, and angle AMO is equal to angle CNO because they are perpendicular. अब हमें पता है कि अगर ये perpendicular है मीन्स क्या है, 90 डिग्री. ओके, इफ इट इज़ perpendicular then it is 90 डिग्री. ओके, ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, ये हमें गिवन है. सो वी कैन से दैट RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से दो दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. विच टू ट्रायंगल? ट्रायंगल AMO and triangle OCN. Okay, these two triangle are congruent to each other. Now AM is equal to 1 by 2 AB because perpendicular from the center bisect the chord. अगर perpendicular है सेंटर से जा रहा है तो वो क्या करेगा, chord को bisect करेगा. तो we can write it AM is equal to 1 by 2 AB. Similarly CN is equal to 1 by 2 CD. Okay, so 1 by 2 AB is equal to 1 by 2 CD because AB is equal to CD. Okay, अगर ये दोनों इक्वल हैं, AM इज इक्वल टू सी एन, हमने बोला AM इज इक्वल टू सी एन इज गिवन. सो इफ़ AM एंड सी एन इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि AB इज इक्वल टू सी डी बिकॉज AM इज इक्वल टू सी एन. सो वी कैन राइट इट. सो chords ऑफ अ सर्कल that are equidistant from the center are equal in length. Okay, understand? So these are our theorem number 10.7. Okay, now see question number first in exercise 10.4. So what is the question? Two circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter. There are two circles are there and the radius are different, 5 centimeter and 3 centimeter. Intersect at 2 points and its distance between their center is 4 centimeter. Distance between their center is 4 centimeter. Okay, so find the length of the common chord. So we have to find the length of the common chord. Okay, so let's do this question. So student, let's see the question number first. Okay, see here, this is the circle. First circle which is radius है 5 centimeter. Second circle radius is 3 centimeter and it's given. Both center के बीच का distance कितना है, 4 centimeter. Okay, and this is our common chord AB. Okay, see, common chord AB is our common chord. Okay, in both the circle. Okay, so AB is equal to हमें find करना है what is the length of AB. Okay, so to find the AB we know OA is equal to 5 centimeter, O dash A is equal to 3 centimeter. Okay, so in OA O dash, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ OA O dash ट्रायंगल की, so in this triangle we write it OA square plus OA square is equal to OO dash 5 square plus it's 25 centimeter. Okay, now OO dash is equal to, if we write out
ओ ओ डैश प्लस ओ डैश स्क्वायर प्लस ए ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। क्या ये होता है, मिलता है हमें? सो ओ डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर, ए ओ डैश इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओके, सो 3 स्क्वायर 3 होल स्क्वायर। ओके, so what is given? 16 plus 9, that is 25. Okay, so we can see that here Pythagoras theorem is true. Okay, we can see here Pythagoras theorem is true for this 16 plus 9 is equal to 25. Okay, so this is our right angle triangle. Okay, by Pythagoras theorem we can write it OA square is equal to O dash square plus AO dash square. Okay, understand? So if these are so angle O dash is right angle. Angle O dash पे क्या हो रहा है हमारा? right angle बन रहा है. Okay, understand? So we can write it angle AO dash O is equal to 90 डिग्री, मीन्स ओ डैश पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है. ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम इन ओ बी ओ डैश, यहाँ पर भी हमारा सेम रहेगा. ओके, ओ बी ओ डैश इज ऑल्सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट इज 25 सेंटीमीटर, एंड सेम हियर ओ डैश स्क्वायर प्लस बी ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, दैट इज 25. ओके, फोर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. 16 प्लस 9 दैट इज 25. ओके, अंडरस्टैंड? सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट बी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ बी डैश स्क्वायर. सो इट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. ओके, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, मीन्स हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है. सेकेंड इक्वेशन से भी ये एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री. ओके, सो इट बिकम अ 180. ओके, अंडरस्टैंड? बी ओ डैश इज इक्वल टू 90. ओके, अंडरस्टैंड? बी ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री. So if we add equation first and second, AO dash AO dash plus BO dash O is equal to 180. ओके, अगर ये हमारा 180 हो रहा है, मीन्स ए ओ डैश ओ प्लस बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू 180. 90 प्लस 90 डेट इज़ 180. अगर मैंने दोनों एंगल्स को प्लस किया, सो वी गेट 90 प्लस 90 डेट इज़ 180 डिग्री. ओके, अंडरस्टैंड? So we can write A O dash B is equal to 180 minus फोर हो गया. फुल हमारा A O dash B क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री. ओके, एंड इफ A O dash B is equal to will be a straight line. Okay, A O dash B will be a straight line. और if this is a straight line, then center of this circle is here. ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो सेंटर कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ. हमने बोला ए ओ डैश बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो ए बी इज इक्वल टू ओ डैश ए प्लस
ओ डैश बी। ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हमारा यही होगा 3 + 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड। So student, what is the length of AB? AB is equal to 6 centimeter. Okay, understand? So this way you complete the question number first. Okay. Now our question number 2 is, if two chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. Okay, means हमको proof करना है. See, first of all we have to draw the rough figure. If two equal chords of a circle intersect within the circle, see आप अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे आपकी बुक में, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है ये. ओके, देयर इज सेम क्वेश्चन. सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन to see example number 2 and complete the question number 2. Okay, understand? So question number 3 is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection of a center of the to the center makes equal angle with the chords. Okay, make equal angle at the chords. So what is given? AB is equal to CD. Chords intersect at X. Let the chord intersect at X. Now prove. What is we have to prove? Angle OXL is equal to angle OXM. Angle OXL is equal to angle OXM. And कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम OL परपेंडिकुलर करेंगे. परपेंडिकुलर वी हैव टू ड्रॉ OL perpendicular to AB and OM perpendicular to CD. Okay, so we have to prove in OLX and OMX. So OLX is equal to OMX because they are 90 degree, it's perpendicular. Okay, and OX is equal to OX because it's common, and OL is equal to OM because they are equal chords are equidistant from the center. We know that equal chords are equidistant from the center. So we write it, triangle OCX is congruent to triangle OMX. Okay, understand? So student, we can write it by RHS, means right angle hypotenuse side. So we can write it OXL is equal to angle OXL is equal to angle OXM by CPCT. Okay, understand? So this way we have to prove the question third. Okay, so student, let's see question number 4. If a line intersect two concentric circles with center O at ABCD, prove that AB is equal to CD. We have to prove AB is equal to CD. Okay, so OM is let's do the construction. Two concentric circle हैं and it's given. Okay, figure is given in your book. See the figure. We have to construct OM. हमने क्या किया? OM कंस्ट्रक्ट किया. मीन्स हमने उस सीकेंड पर क्या डाला है? एक परपेंडिकुलर डाला है. ओके, अंडरस्टैंड? सी, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O एट ABCD, 4 पॉइंट पर हो रहा है कट. हमें बताना है AB इज इक्वल टू CD. ओके, OM इज परपेंडिकुलर टू AD. हमने जो लाइन AD है उस पर OM को परपेंडिकुलर डाला है. ओके, नाउ BM इज इक्वल टू CM बिकॉज सेंटर से जो परपेंडिकुलर डलता है कॉर्ड पर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. सो AM इज इक्वल टू DM. So AM is equal to DM. AM is equal to, if AM is equal to DM, फर्स्ट एंड सेकेंड दो इक्वेशन मिली हमें. BM is equal to CM is first equation, AM is equal to DM is our second equation. Okay, because perpendicular from center bisect the chord. Okay, understand? Now second minus first, if we दोनों हम इक्वेशंस को देखते हैं. सो AM is equal to DM and BM is equal to CM. So we can get
अगर ए एम एंड बी एम, ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी, एंड डी एम में से सी एम को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सी डी, विच इज़ अवर, so we have to prove AB is equal to CD. Okay, understand? So this way we have complete question number 4. So read out the question. Three girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Okay, Reshma throw a ball to Salma and Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? Okay, so let's draw the circle. See here, R is Reshma, S is Salma and M is Mandeep. Okay, now we know that from the question we have draw this circle. Okay, and R is Reshma, S is Salma and M is Mandeep. Okay, O is the center, so OR is equal to OM is equal to OS, because the center से distance कितना है, radius is our 5 centimeter. Okay, and RS is equal to 6 centimeter and RM is also 6 centimeter. Okay, so if these are 6 centimeter and this is also 6 centimeter, so we have to find this way. Okay, RM हमें find करना है. Okay, understand? So we have to find RM. Okay student, so student we have to draw perpendicular from center or to RS. Okay, RS is equal to 6, so RL is equal to 3 because these are perpendicular bisector of the chord. ओके, सेंटर से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. सो आर एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एल एस इज ऑल्सो इज 3 सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस ट्रैंगल, सी द ट्रैंगल ओ आर एल, ट्रैंगल इन, so see in triangle OLR, OR square is equal to RL square plus OL square. OR is 5, RL is 3 and we have to find OL. Okay, so 25 is equal to 9 plus OL square, so 25 minus 9, that is 16. So OL square is equal to 16, so OL is equal to 4. Okay, understand? So we find the OL. OL is 4. Okay, so student we find OL is equal to 4. Now we say see ORS, ORS. Okay, so 1/2 B into P means अगर हमें एरिया ऑफ ORS फाइंड करना है तो दिस इज 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर. ओके, अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट OL we have to find OL, and so see triangle ORS. In triangle ORS, if we take RS as the base, so RS is 6 centimeter and perpendicular OL is we have find 4 centimeter. Okay, so 1/2 into 6 into 4. Okay, understand? And अगर हम बेस चेंज कर दें, अगर हम बेस लें OS इज़ अवर रेडियस. ओके, रेडियस इज़ अवर 5 सेंटीमीटर. सो 1/2 इंटू 5 इंटू RN उस कंडीशन में हमारा RN जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड? सो सी हमने क्या किया, एक ही ट्रायंगल के एरिया को हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं. अगर हमने बेस RS लिया तो RS इज 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, डेट इज़ 24/5. ओके, हमारे पास 24 आ गया. एंड RN हमारा दूसरा, अगर हमने उसे OS को अगर हमने बेस लिया है तो OS इंटू RN. ओके, सो वी फाइंड RN is equal to 24/5, that is 4.8 meter. 4.8 meter is our RN. Okay, understand? So if we find RN is equal to 4.8 meter. So what is RM? What is the value of RM? RN plus MN. And we know if we draw perpendicular bisector, perpendicular from center to a chord, then it bisect the
chord. Okay, so Rn is equal to 4.8, so Mn is also 4.8, so your value is 9.6 meter. So value of Rm is 9.6 centimeter. Okay, so question number 6 you have to do by yourself. Okay, have a good day.